Very good morning, my dear students. So now let's start with MCQ of AIPMT 2014 paper. So far we people have completed your 2015, 16, 17, 18 and 19 paper. Now we are going to start with AIPMT paper solution of 2014. Here on screen, question number 91. Which one of the following show isogamy with non-flagellated gametes? Okay, dear students, sexual reproduction in flowering plant. The question is of in this we people have understood sexual mode of reproduction. It can be isogamous, it can be oogamous, it can be anisogamous. Examples are clearly given in our NCERT textbook. Isogamy पूछा है in the sense two gametes are same in the sense I am talking about they are morphologically same. And what it is asked, non-flagellated gametes in the sense they are non-motile, they do not have flagella. What options are given? Sargassum, Ectocarpus, Ulothrix, Spirogyra. So what could be the possible answer? It's your Spirogyra, right, whose mode of reproduction is isogamous and it is having non-flagellated gametes. So 91, answer number 4, Spirogyra is going to come. Let's look out question number 92. Five kingdom system of classification suggested by R.H. Whittaker is not based on, okay, we know five kingdom classification proposed by R.H. Whittaker. We have also understood the criterias, right? What were the criterias? Cell structure, mode of reproduction, mode of nutrition, complexity of body organization. These are the criterias of R.H. Whittaker's five kingdom classification. Now let's look out what options are given. Option 1, presence or absence of well-defined nucleus. Option 2, mode of reproduction. Option 3, mode of nutrition. Option 4, complexity of body organization. Okay, dear students, in this question, option number 1, presence or absence of well-defined nucleus was not the criteria. What was the criteria? Cell structure. Cell structure का मतलब whether the cell is prokaryotic cell or eukaryotic cell. That was the criteria. It is not so well-defined nucleus. Okay. So which is not based on, so 92, answer number 1 is going to come. Okay. Question number 93. Which one of the following fungi contains hallucinogens? Okay, psychotic drugs we are talking about. कौन सी फंगस से आपको हेल्यूसिनोजेंस मिलता है? व्हाट ऑप्शंस आर गिवन? मॉर्शेला, एस्क्यूलेंटा, अमेंटिया, मस्केरिया, न्यूरोस्पोरा स्पीशीज एंड यूस्टिलेगो स्पीशीज. ओके डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर जो है ना वो आएगा आपका अमेंटिया मस्केरिया. Okay, this is fungus from which we can obtain hallucinogens. Okay, let's look out question number 94. Archibacteria differs from eubacteria in, okay dear students, what options are given? Cell membrane structure, mode of nutrition, cell shape and mode of reproduction. Dear student, Archibacteria are primitive bacteria. Yes or no? Yes, they have different cell structure in comparison to eubacteria, which we call as true bacteria. What options are given? Archibacteria differs from eubacteria in cell membrane structure. So 94, answer number 1, cell membrane structure is going to come. Basically, it is having single layer of lipid molecules. Am I clear? Yes. Let's look out. Question number 95. Which one of the following is wrong about chara? Okay, dear students, this question belongs to your plant kingdom. Question belongs to your plant kingdom. Okay, ये डायग्राम दिया गया है आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में. चारा का डायग्राम दिया गया है, राइट? फ्रॉम दैट द क्वेश्चन इज, ओके, व्हाट इज इट? रॉन्ग पूछा है. अपर ऊगोनियम एंड लोअर राउंड एंथरीडियम. यस, इट इज़ ट्रू, है ना. ऊपर की बाजू कौन होता है? ऊगोनियम होता है एंड नीचे कौन होता है? एंथरीडियम होता है. सेकेंड वन, ग्लोब्यूल एंड न्यूक्लियाई प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट. ओके, ट्रू इट इज़. अपर एंथरीडियम एंड लोअर ऊगोनियम. नहीं, ऊपर क्या बोला था मैंने? ऊगोनियम बोला था, दैट इज़ फीमेल पार्ट. एंड नीचे क्या बोला था मैंने? मेल पार्ट बोला था, है ना. तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया. चलो यहाँ पे एक और है, ग्लोब्यूल इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. येस, दिस इज ऑल्सो ट्रू.
So 95, answer number 3 is going to come, जो कि wrong option है, upper antheridium and lower oogonium, क्योंकि हमको wrong select करना है, ठीक है. So 95, answer number 3 is going to come, and here is the diagram. As you can see, the same diagram is given in our NCERT book. Oogonium, that is female sex organ, and antheridium, that is male sex organ, ठीक है. चलो, let's look out question number 96. Which of the following is responsible for pit formation? Pit formation हमको पता है, ब्रायोफाइट का ये क्वेश्चन है. अगेन प्लांट किंगडम, मार्केंशिया, रिक्शिया, फ्यूनेरिया एंड स्पैगनम. तो पिट फॉर्मेशन के लिए विच एक्ट एज फ्यूअल, who is responsible? It's sphagnum. So 96, answer number 4, sphagnum is going to come. Let's look out question number 97. Placenta and pericarp are both edible portion in. Okay dear students, यहाँ पे क्या पूछा गया है? Pericarp as well as placenta are edible portion in apple, tomato, banana and potato. Okay, if we are talking about your apple, तो वो तो क्या है, वहाँ पे वो जो thalamus है, that is the edible part. Banana is parthenocarpic fruit. Potato is storage of modification of stem, basically I can say modification of stem for storage of food. यहाँ पे पूछा क्या गया है भाई, placenta and pericarp both are edible in, तो that is your tomato, that is your tomato. So 97, answer number 3 is going to come. Let's look out the next one. When margin of sepals or petals overlap one another without any particular direction, the condition is termed as. Okay, the question, it is of morphology, plant morphology, chapter number 5, and estivation it is. What is estivation? Arrangement of sepals and petals. इसको हमने क्या बोला था? Estivation बोला था, है ना. What it is written? This is exact lines which are given in our NCERT book. Overlaps one another without any particular direction. So what could be the possible answer? Vexillary, imbricate, twisted, velvet. What is the answer? It is imbricate. Am I clear? So 98, answer number 2 is going to come. Now let's look out question number 99. You are given a fairly old piece of dicot stem and a dicot root. Okay, आपको क्या दिया गया है? Dicot stem and dicot root दिया गया है. Okay, which of the following anatomical structure will you use to distinguish between the two? ठीक है, आपको दो अलग स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं. रूट एंड स्टेम्स आर गिवन एंड यू नीड टू सी द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर विच हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन dicot root and dicot stem. Dear students, dicot root and dicot stem both exhibit secondary growth. मतलब उसमें secondary xylem होता है, secondary phloem भी होता है, right? Protoxylem भी होता है, cortical cell भी होता है. लेकिन देखो भाई, हमने पढ़ा था exarch and endarch arrangement, ऐसा कुछ पढ़ा था. Yes, xylem की अरेंजमेंट है ना, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम. प्रोटोजाइलम इज टूवर्ड्स पेरीफेरी. इन केस ऑफ रूट, अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज एक्सार्च, राइट. वेरेज इन केस ऑफ योर डाइकॉट स्टेम, प्रोटोजाइलम जो होता है इट इज टूवर्ड्स सेंटर एंड अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज एंडार्च, राइट. So dear students, 99, which anatomical structure we are looking for distinguishing dicot stem and dicot root? It's protoxylem, as we have understood, exarch and endarch arrangement in root and stem respectively. So 99, answer number 3 is going to come. Let's look out question number 100. Which one of the following statement is correct? Which one of the following statement is correct? Number 1, the seed in grasses is not endospermic. Okay, which is correct पूछा है, correct पूछा है. Okay, seed in grasses is not endospermic. वो endospermic है क्योंकि we have understood ना, most monocots are endospermic. Okay, mango is parthenocarpic fruit. Is mango a parthenocarpic fruit? No. Mango is your drupe, we people have understood, right? It's true fruit. A proteinaceous alluron layer is present in maize grain.
ये ट्रू है. Yes, proteinaceous aileron layer is present in maize grain. Maize grain. The seed of maize, we people have understood monocot seed. It is having scutellum, right? Endosperm separation between two is a protein-rich layer which is called as your aileron layer, right? So correct one कौन सा आ गया आपका? थर्ड ऑप्शन आ गया. So 100 का आंसर नंबर 3 आएगा, right? And last one, a sterile pistil is called a staminode. नहीं, ये sterile stamen is called as staminode. Sterile pistil को तो क्या बोलते हैं हम? Pistillode बोलते हैं. So 100 correct statement is asked. So answer number 3 is going to come. Next one, tracheids differ from other tracheary elements in. Other tracheary elements का मतलब पूछा गया है आपको vessels. ठीक है, जाइलम के बारे में पूछा है. ट्रेकियरी एलिमेंट्स आर योर जाइलम्स, सॉरी वेसल्स एंड योर ट्रैकेट्स. सो बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रैकेट्स एंड वेसल्स? क्या डिफरेंस होता है? दैट क्वेश्चन इज. और व्हाट ऑप्शंस आर गिवन? हैविंग कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, बीइंग imperforated, lacking nucleus, being lignified. Dear student, tracheids differs from vessels, right, in having your what we can say, imperforation. Okay, so answer number 2 is going to come. 101, answer number 2 is going to come. Am I clear? Okay, if you are talking about your tracheids, तो उसमें क्या present होती है? Pits, right? and vessels में क्या present होती है? Perforated walls. ओके, वेसल्स में प्रेजेंट होती है परफोरेटेड वॉल्स, ट्रैकेज में प्रेजेंट होती है पिट्स, एंड दिस इज हाउ यू कैन डिफर ट्रैकेज एंड योर वेसल्स. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 102. एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम. अभी मैंने आपको बोला कैरेट, ग्राउंड नट, स्वीट पोटैटो. पोटैटो क्या होगा? कैरेट, स्वीट पोटैटो तो क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है ना. एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम, दैट इज अवर पोटैटो. So 102, answer number 4 is going to come. 103, which structure performs the function of mitochondria in bacteria? Nucleoid, ribosome, cell wall, mesosome. What is your answer? 103, answer number 4, mesosome is going to come. Okay, so it's mesosome which is involved, which is present in bacteria, okay, which performs the function of mitochondria. Question number 104. The solid linear cytoskeleton element having a diameter of 6 nanometer and made up of single type of monomer are known as. Okay, what options are given? Microtubule, microfilament, intermediate filament, and your laminins. What question is? A solid linear cytoskeleton element having a diameter of 6 nanometer and made up of single type of monomer. Okay, so repeating unit same है. तो भाई देखो, माइक्रोट्यूब्यूल्स उसका तो 25 नैनोमीटर है, राइट. माइक्रोफिलामेंट उसका 6 नैनोमीटर है, विच इज़ मेड अप ऑफ एक्टीन प्रोटीन. ओके, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड योर लैमिनिन. इंटरमीडिएट फिलामेंट इट इज़ ऑफ 10 नैनोमीटर एंड लैमिन्स आर न्यूक्लियर प्रोटीन. ओके, तो बेसिकली 6 नैनोमीटर ये आप याद रख लो अभी. Microfilament 6 nanometer, microtubules 25 nanometer, intermediate filament 10 nanometer, and laminins are your nuclear protein. So 104, answer number 2, microfilament is going to come. Let's look out question number 105. The osmotic expansion of cell kept in water is chiefly regulated by, okay, this is osmosis. कौन रेगुलेट करता है? वैक्यूल ना भाई. येस, व्हाट ऑप्शंस आर गिवन? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स एंड राइबोसोम्स. सो व्हाट आंसर इज गोइंग टू कम? 105, आंसर नंबर 2, वैक्यूल. ऑस्मो रेगुलेशन का काम होता है वैक्यूल का. ओके, चलो नाउ, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ DNA in cell remains 4C level if initial amount is denoted as 2C. अब ये तो सिंथेटिक फेस की बात कर दी ना. यस और नो? सिंथेटिक फेस में द नंबर ऑफ क्रोमोजोम गेट्स डबल्ड, वी नो दिस थिंग, है ना. तो 4C कब होगा? G0, G1 S, ओनली G2 M कब होगा? G2M में होगा ना.
G2M में होगा ना, yes yes, है ना. So what I am saying, S phase में तो क्या हो गया, interphase if you are talking about interphase में G1 phase, S phase, G2 phase followed by M phase. Number of chromosome gets doubled in S phase. अब S के बाद को जाहिर सी बात है क्या आता है, it's your G2 and your M phase. So G2 and M phase में क्या होता है, 4C. Okay, चलो. Now let's look out question number 107. Match the following and select the correct answer. Centrioles, chlorophyll, cristae, ribozyme. Centriole क्या है, chlorophyll, cristae and ribozymes. Look out for the options which are given. चलो, centriole, basal body, cilia और flagella. Okay, chlorophyll तो क्या आएगा, बोलो क्लोरोफिल क्या, थैलेकॉइड, यस. क्रिस्टे क्या आएगा, इनफोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया. राइबोजाइम क्या है, न्यूक्लिक एसिड, दैट इज आरएनए, है ना. तो ऑप्शन देखो, A4, B2, C1, D क्या है, D राइबोजाइम, न्यूक्लिक एसिड. 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3 कौन सा ऑप्शन है, इट्स योर ऑप्शन नंबर 1. ठीक है. सो 107 आंसर नंबर 1 इज गोइंग टू कम. नेक्स्ट वन, डॉक्टर F. Wendt noted that if coleoptile tip were removed and placed on agar for 1 hour, the agar would produce a bending. Again, it is Avina curvature test. When placed on one side of fleshy cut coleoptile stump, of what significance is this experiment. क्या किया था हमने, देखो experiments are given. This is your Avina coleoptile, है ना. टिप हमने रिमूव करी, वहाँ पे अगार ब्लॉक रखा, लाइट दी, तो इट्स गोइंग टू बैंड. दिस इज़ योर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट. सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या है, एज यू कैन सी कि भाई अगार ब्लॉक ऊपर रखा गया है, राइट, एंड बेंडिंग होती है, राइट. बेंडिंग कौन सी डिरेक्शन में होती है, वी नो. Okay, and this is your third experiment. Okay, what options are given, let's look out. It made possible the isolation and exact identification of auxin. It is the basis for quantitative determination of small amount of growth promoting substances. It supports the hypothesis that IAA is auxin. And fourth one, it demonstrated polar movement of auxin. Dear student, if you are talking about this, right, तो ये क्या demonstrate करता है, polar movement of auxin. as we know कि जो एविना कर्वेचर टेस्ट है, इट इंडिकेट्स मूवमेंट ऑफ ऑक्सिन, यस और नो, यस. सो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर नंबर 4. ओके, सो इसका आंसर क्या आएगा आपका, आंसर नंबर 4. सो 108 आंसर नंबर 4. ओके, चलो. 109, what is given, deficiency symptoms of nitrogen and potassium are visible फर्स्ट इन. ओके, विजिबल फर्स्ट इन पूछा गया है. सीनेसेंट लीव्स, यंग लीव्स, रूट्स एंड बर्ड्स. वी नो कि नाइट्रोजन एंड पोटेशियम आर मोबाइल एलिमेंट. सो वेन एवर देर इज डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन और पोटेशियम, एज दे आर मोबाइल, दे मूव्स फ्रॉम ओल्ड लीव्स टू यंग लीफ, है ना. तो ओल्ड लीफ के पास नहीं है नाइट्रोजन एंड पोटेशियम, क्योंकि वहाँ से वेयर इट गोज टू यंग लीव्स, राइट. सो फर्स्ट डेफिशिएंसी सिम्टम्स विल be seen in senescent leaves. So 109 answer number 1 is going to come. Let's look out question number 110. In which one of the following processes carbon dioxide is not released? Okay, चलो, carbon dioxide is not released पूछा गया है. Aerobic respiration in plants रिलीज होता है. एरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, यस, हम में तो रिलीज होता है. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, यस, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एज अकर इन केस ऑफ यीस्ट, है ना. यीस्ट में it gets converted into aldehyde, finally it gets converted into ethyl alcohol and carbon dioxide. तो इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. लैक्टेट फर्मेंटेशन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, तो डियर स्टूडेंट्स इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता है, राइट. व्हेन एनिमल परफॉर्म्स एक्सरसाइज, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, एट दैट टाइम आवर सेल performs anaerobic respiration and this is called as lactic acid fermentation, during which no carbon dioxide is released. So 110 answer number 4 is going to come. Am I clear? Yes. So dear student, this is your
first set of MCQ of 2014 AIPMT paper. I hope you understood till now that all question belongs to your NCERT book. So please refer NCERT book very nicely for scoring nice in NEET examination. Bye everyone.